वेलकम टू फूड दिस वीक। इस हफ्ते हम लोग बात करने वाले हैं रेसिपीज की। अब रेसिपीज तो हम हमेशा आपको सिखाते हैं, ऐसा खास क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। हम लोग बात करेंगे रेसिपीज के पीछे उस कंट्रोवर्सी की, गॉसिप की, हिस्ट्री की। सो वेट एंड वॉच दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फूड दिस वीक। This week wrap. Food पहुंचा to one of a kind party for food bloggers. आज हम बनाने वाले हैं एक स्पाइसी सॉसेज स्ट्यू। आयुषी शाह ने ट्रीट किया बच्चा पार्टी को। And we're going to be doing a whole range of desserts for kids. और जानिए इटालियन कुकिंग की ABC। As I promised, आज हम उन रेसिपीज की बात कर रहे हैं जिनके पीछे खूब सारी कंट्रोवर्सी है और हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। पहली डिश जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बटर चिकन। तो बटर चिकन जो है ऐसा माना जाता है इन्वेंट हुआ था दिल्ली के एक रेस्टोरेंट मोती महल में। बट द रियल स्टोरी इज इट वाज इन्वेंटेड इन पर्शिया 150 इयर्स बैक। इसी तरह की खाने की कहानियां जानने के लिए अगर आप इंटरनेट पे लॉग इन करें, बिकॉज वी आर ऑल्सो टेक savvy these days, तो फूड ब्लॉगर्स आर डूइंग वेरी वेल। उनकी जो कहानियां होती हैं काफी इंटरेस्टिंग होती हैं और वो लिटरली खोद के जो है खाने की स्टोरीज बाहर निकालते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज फूड ब्लॉगर्स। टीवी से लेकर फूड मैगजीन्स तक दुनिया भर में ऐसी कोई मीडिया नहीं जो खाने को प्रमोट नहीं करती, और इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए फूडीज यूनाइट होते हैं टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर फूड। जब मैं बनाती थी खाना मैं खुद ही भूल जाती थी, इसीलिए मैंने एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया ताकि मैं खुद पढ़ सकूं, बट फिर लोग भी पढ़ने लगे। राइट नाउ मेरे ब्लॉग को अबाउट 3000 लोग पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ ट्विटर पर है, और फेसबुक पर अलग से 500 लोग हैं जो मेरा ब्लॉग पढ़ते हैं। In India, blogging has really taken off, especially food blogging, especially since we have so many chefs in the country. We have so many home cooks in the country who are blogging these days, and it's really great exchanging ideas with people, learning from people, and it makes me happy that people read what I put out there and actually take the time to comment, actually take the time to prepare what the recipes that I have put out. सिर्फ आम आदमी ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी अपना फूड थॉट एक्सप्रेस करते हैं अपने ब्लॉग्स पे, जैसे कि मारिया गोरेटी। You can write anything you feel like. It's your space. You can express yourself the way you feel like, and there's nothing right or wrong about foods. And it's wonderful when people call in and say, we tried this recipe and it really worked. And I like to reply back to the people who do write in and follow. अब इंटरनेट बन गया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बना है आवाज एक एवरेज कुक, क्रिटिक, होम मेकर और ट्रू फूड लवर की। इंडिया में करीबन 3660 फूड ब्लॉगर्स हैं जो खाने को लेकर गए हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स, स्प्रेडिंग द लव फॉर इंडियन फूड अक्रॉस द वर्ल्ड। और इन सब को एक साथ इकट्ठा करने के लिए बन गया है द फूड ब्लॉगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। To actually get together people who are passionate, interested, and in the industry of food, the Food Bloggers Association was started. There's a lot happening, very quickly developing, whether it's the mobile apps or online or through the internet. It's just going to grow leaps and bounds. ब्लॉगिंग की दुनिया इतनी इन्फ्लुएंशियल हो गई है कि ये मार्केट में किसी नई प्रोडक्ट का मेक और ब्रेक भी डिसाइड कर सकता है। These are very important for restaurants. It can actually make or break a restaurant. They do take extra care when there is a blogger around, known or unknown, because everything is out in public on social media or online, and it affects their credibility, sales and footfalls, definitely, most definitely. Food blogging began trending with the likes of Rushina, जिन्होंने वेब स्पेस को यूटिलाइज किया to be amongst the pioneers of food blogging in India, with the likes of Rushina Ghidi। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी सबसे फेवरेट फूड ब्लॉगर से। जब शायद मैं 12-13 साल का था तब से इन्होंने खाने के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। जब भी मुझे घर की याद आती है, वो मॉम के हाथ का खाना नहीं मिलता है, तो आई कम टू रुशीना। सो शी कुक्स दैट वेल। तो रुशीना, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फूड ब्लॉगर टू नो हाउ टू कुक? आई डोंट थिंक सो। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको फूड अच्छा लगे, वेदर ईटिंग, वेदर कुकिंग, वेदर ट्राइंग आउट न्यू रेस्टोरेंट्स।
You should love your food. That's the most important. So, what kind of blog do you run? It has been a journal, an online journal of my discovery of food. So I started out with home cooking, and then as I established myself as a food writer and I traveled all over, it talked about my discovery of food around the world. So it's been a part of my life, just like you would have a diary. After you opened your blog, the blog got famous, now you're a celebrity, almost a celebrity chef come food writer, and now you have a studio. So how do you manage this whole juggling of things? I have a very, very strong backup team in the studio as well as at home. My husband is very supportive. I wouldn't have done it without him. यहाँ पे थोड़ी सी theory उल्टी है, जैसे कहा जाता है ना कि behind every successful man there's a woman, behind every successful woman is also a man. तो देखते हैं फूड ब्लॉगर्स के स्टैंडर्ड्स एक शेफ से कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। रुशीना गिलिदियाल की एक शाम फूड ब्लॉगर्स के नाम। Hi, welcome to APB Cook Studio. मेरा नाम रुशीना मुंशा गिलदियाल है. I'm just about to welcome a whole bunch of foodie friends into this space which I have created for food lovers. आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पकाने वाले हैं यमीज के इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ, जो आप अपने आप में भी खा सकते हैं. उनको जस्ट हीट एंड सर्व. So just like the idea is go experiment, you know, come up with your own combinations and have fun. Sauteed yummy sausages with cayenne and paprika. I had some cayenne pepper. The cayenne pepper has got a very smoky taste. It goes very well with the sausages. And then I wanted a little bit of sweetness. I thought I will use some honey. Then I wanted to accentuate a particular herb. So I used some rosemary, and to get the freshness, I used some parsley on top of it. So that's why I needed a medium to remember basically, and to also share whatever I do. So that's why I started blogging. Contemplating of doing something with food all my life, but at what level, I think time will tell. और रुशीना ने उस दिन क्या बनाया? हाय, आज हम बनाने वाले हैं एक स्पाइसी सॉसेज स्ट्यू. फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू टू मेक द सॉसेज स्ट्यू इज टेक आउट सम यमीज कॉकटेल सॉसेजेस फ्रॉम द फ्रिज. हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और हमारे यमी सॉसेजेस. एक बार आपका पैन हॉट हो जाए, आप यमीज के सॉसेजेस अंदर ऐड कर दीजिए और उनको स्टर फ्राई कीजिए जब तक वो थोड़े से गोल्डन हो जाते हैं. इन सॉसेजेस को हम थोड़ी देर के लिए एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख देंगे ताकि स्ट्यू में ये ओवरकुक ना हो जाए. अब इसी पैन में हम अनियंस डालेंगे. अब इसमें हम थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डालेंगे क्योंकि हम इंडियन हैं और ग्रीन चिलीज के बिना तो हमारा काम ही नहीं बनता. एंड सम गार्लिक. And then we will add baked beans. So we are going to add generous amount of cheese. And now this is ready to serve up. And doesn't that look nice? It looks like you cooked बहुत टाइम लगाया है बनने को, पर एक्चुअली 10 मिनट में बन गया और टेस्टी भी होने वाला है. You have
a tip or a certain guideline for them? Do everything with all your heart and lots of passion, because that comes through in your work. तो अगर आपके फ्रेंड्स और नेबर्स आपकी किचन क्रिएटिविटी से इम्प्रेस्ड हैं, तो एक्सप्लोर कीजिए अपने टैलेंट्स को एंड शो योर बेस्ट टू द वर्ल्ड. स्टार्ट ब्लॉगिंग. एक्चुअली वेरी टेस्टी. मन कर रहा है कि इसके बारे में एक फूड ब्लॉग लिखी जाए. अगर आपको भी खाने का तो शौक है तो आप भी अपनी फूड ब्लॉग चालू कर सकते हैं. एंड आफ्टर द ब्रेक यू आर गोइंग टू गेट अ बीट द हीट रेसिपी एंड आल्सो अ लॉट ऑफ किडी ट्रीट्स. वेलकम बैक. अब फलूदा खाने का किसको शौक नहीं है, और हमें जनरली लगता है फलूदा हम लोग उस नूडल को बोलते हैं जो कुल्फी के साथ सर्व आता है. दैट इज रॉन्ग. फलूदा इज एक्चुअली अ ड्रिंक, अ बेवरेज दैट इज सर्व्ड इन पर्शिया, जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं. सब्जा है, नूडल्स हैं, रोज सिरप है, दूध डला हुआ है, आइसक्रीम डली हुई है. तो आप अपना एक फलूदा का वर्जन बना सकते हैं. लेकिन अगर आपको इस ट्रेडिशनल फलूदे की रेसिपी नहीं चाहिए, आयुषी शाह आपको काफी नई तरह की रेसिपीज देने वाली है. जूनियर्स, किड्स, लिटिल वन, ऐसे कुछ टाइटल से पुकार के मम्मीज, नानीज, दादीज इन नन्हे मुन्ने सितारों को किचन में नहीं आने देते. मगर दिस यंगर जनरेशन इज फाइटिंग ऑल ऑड्स and claiming their place in the kitchen very early on. और food hall event इसका है a prime example. जब 24 साल की आयुषी शाह, owner of the bakery called Icing on Top, ने decide किया to be with kids, तो ये बच्चे झटपट बड़े हो गए. तो ऐसे कौन से innovative dishes हैं which she cooks up with them? We are going to be doing a whole range of desserts for kids. We have vanilla sponge. I'm going to mix it in this bowl. That's 250 grams of white chocolate. You have to chop it up finely. And 125 grams of fresh cream. You boil the fresh cream. That is a white chocolate ganache. And then pour it onto the chocolate and mix it really well. So we make little balls. And we should put it in the fridge for about 20 minutes to half an hour. Dark chocolate ganache. We chop up the chocolate like this. We add boiled cream to it, and then we whisk it. Lollipops and all. I learned how to make dessert. My favorite was the cake pop. काफी अच्छी एक्टिविटी है ये पेरेंट्स एंड बच्चों साथ में करने के लिए. बच्चों के लिए काफी थेरापेटिक है. उनको लगता है पेरेंट्स से कुछ सीख रहे हैं. और इसके साथ लेट्स रेज अ टोस्ट टू दीज बडिंग मास्टर शेफ्स जिनके पैशन और प्रॉमिस को सराहा और मोटिवेट किया यंग बेकर एंड एंटरप्रेन्योर आयुषी शाह ने. कीप गोइंग यंग गन्स. I like seeing kids that are happy when they munch on something. मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, पर मैंने कुछ कोर्स या कुछ भी नहीं किया था. घर में बेकिंग चालू किया था और ऐसे ही किया था. इसलिए किसी को भी बेकिंग करना है या शेफ बनना है तो बहुत आसान है. डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है. आपको अगर खाने का पसंद हो तो सब कुछ हो सकता है.